Hi students, good afternoon. Good afternoon, yes, just 3 minutes back, 4 minutes back, afternoon हुआ it's 12 p.m. now. I'm Sarthak Sharma, I'm your legal reasoning expert at this wonderful platform that makes your learning easy, effective, efficient and interesting. Yes, जितना wonderful ये platform है, उतने ही wonderful हमारे students हैं and उतना ही ज़्यादा wonderful आज का session होने वाला है. In today's class, we are going to discuss the B.K Pavitra versus Union of India, a very landmark judgment in the history of Indian Supreme Court, and from this judgment, we are going to understand two most important fundamental concepts related to fundamental rights only. The concepts are the rule of consequential seniority and catch-up rule that are used in reservations. So let's start with the class, and before that I wish you all a very happy Children's Day. I pray to God कि आपके अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रहे. And let me switch on the live chats as well. Okay, the live chats are on my screen. Let's start. Let's continue with the class. Let me give you a short intro of myself. Hi Asmita, hey Soham, good afternoon. Let me give you a short intro of myself. Although you all know me, but still the students who are new to this platform and who are watching me for the first time, I'm Sarthak Sharma. I have more than 2 years of teaching experience and I have mentored more than 10,000 students. A lot of my students have been rankers in the prestigious topmost law entrance examinations of this nation. And I have been less of a mentor, more of a companion with my students. आप सबका भी मैं companion ही हूँ इस platform के through in your preparation journey. I hope under my companionship, under my mentorship, you are going to reach your target destination. Students, you can join me on Telegram. The link is on your screen, also in the description box. Just click on the link and join me on Telegram, where I will discuss the schedule of my classes, homework, classwork, and all. You can subscribe to Unacademy for either of the following term for from 1 to 24 months. आपकी screen पर है that you can subscribe for these terms. The subscription is right now at a very economic price, a very low price, and you can have an additional 10% discount by using the code SRT10. This code will also help you to unlock all the free features of Unacademy. If you do not want to pay in lump sum, then there is no cost EMI offer as well. Let's have a look over the unique features of Unacademy. There are a lot more unique features, but these 6 are the top-notch unique features of Unacademy. The live quiz feature for the students is my personal favorite, and I think that a lot of students are loving this feature because at this feature you can obviously participate in a quiz, but at the same time you can host your own quiz as well. Help your fellow mates to grow their knowledge in a particular topic in which you have gained excellence. So सबका साथ सबका विकास and academy के साथ इस feature की वजह से जरूर हो रहा है. Let's move. I hope you are appearing for ULAT, the Academy Law Aptitude Test. If not, then you should appear every Saturday at 11 a.m. It is exactly on the latest CLAT pattern. And the weekly T20 test. The weekly T20 test was on the theme of World T20. We were hoping, I will not say we now hope, but we were hoping that Team India will bring the trophy home. And luckily वो इस बार नहीं ला पाए. But I have this hope which is still alive that you are going to bring your trophy home. And your trophy is All India Rank 1 in your target examination. आपको अपनी ट्रॉफी लानी है तो कंसिस्टेंसी आपका सबसे बड़ा हथियार है. और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए ताकि आपको पढ़ने की आदत बनी रहे, we have come up with the weekly T20 test, a quick 20 minutes revision test for your everyday practice. A 20 minutes, 20 questions, 20 marks test from Monday to Friday. There are 5 different weekdays and there are 5 different sections. Each section is for a particular, each day is for a particular section, I'm sorry. And yes, it is open for all. So even for those students who are not the paid users, they can also appear for the Unacademy weekly T20 test. The special class features are on a screen. You can have a look over the special classes, the features of special classes at Unacademy platform. Yes, special classes are free classes. इसके लिए आपको कुछ payment नहीं करनी है. These are free classes. You can watch them in recorded mode as well as in live mode. I have also taken a lot of special classes. My profile link is in the description. Click on it and watch the special classes. I am damn sure that you will like it. आप देखेंगे तो शेयर करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे. इतने अच्छी special classes Unacademy पर होती आई हैं और होती रहेंगी. So do watch the special classes in order to unlock
The free special classes use the code SRT10. And let's start with the class. So what you are going to learn today? सबसे पहले हम आज के क्लास में एक ऐसा केस डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस केस में कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किए, इवॉल्व किए, जो आपके लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक मेजर पार्ट प्ले करते हैं। एंड द केस रिलेट्स टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। Case relates, the case is very important and it relates to the state of Karnataka primarily and to the whole of India and the Indian constitution generally. Where is national law and the topmost NLU located? In Karnataka, in Bangalore. Bangalore कर्नाटका में ही है, NLSIU Bangalore. So remember, बहुत जरूरी क्वेश्चन है. This case is really important. Primarily, it is focused on the act of an act of Karnataka legislature, but generally it is related to the whole of India. This case. So, what you are going to learn today? You are going to learn two concepts: the concept of consequential seniority and the concept of catch-up rule. Other than these two concepts, you are going to learn a lot of things more. So, मैं यहाँ पर एक area reserve कर रहा हूँ for that. You are going to tell me at the end of this class in the live chats, you are going to tell me कि आज आपने क्या सीखा, what you learned today in this list. Apart from these two concepts, you are going to learn a lot of things more. Okay, so here we will come to this slide after the class, and then we will have a look that today we learned what all things we learned. Okay, let's start with the class. Let me give you a brief overview about Bk Pavitra versus Union of India. So this case is related to the criterion. I'm sorry. I'm sorry. Okay, so this Bk Pavitra versus Union of India is related to the criterion of consequential seniority of scheduled castes and scheduled tribes in matters of promotion in government jobs or in the state of Karnataka. I hope you know that reservation in matters of promotion is also a fundamental right. Article 16 of the Indian Constitution, it's subclause 4A. It's subclause 4 only. Yes, it provides for reservation in matters of promotion. मतलब गवर्नमेंट और जॉब्स में, सरकारी नौकरियों में आपको रिजर्वेशन मिलेगा प्रमोशन के मैटर्स में भी. इन द गवर्नमेंट जॉब्स, in the government jobs in public offices, if you are a reserved category candidate, then you will have reservation not only at the time of appointment but also reservation at the time of promotion. अपॉइंटमेंट में तो रिजर्वेशन होता ही है. आर्टिकल 16 में अपॉइंटमेंट का रिजर्वेशन भी है, that these number of seats are reserved for backward classes, for reserved categories, and yes, there is reservation in matters of promotion as well. So consequential seniority refers to promotion made purely on reservation basis without considering merit. What did you understood by it? As I told you, today you are going to understand two concepts: consequential seniority and catch-up rule. In this overview, it is written that consequential seniority refers to promotion made purely on reservation basis without considering merit. बिना merit को consider किए purely reservation basis पे जब promotion होता है. Let me give you an example. आपको एक example से समझाता हूँ. There are two people. There is a government office. There is a public organization, and A and B are employees in that organization. Okay, A is a general category candidate. B is a reserved category candidate, say SC or ST. Okay, A joined the job on the post of assistant manager. A ने job को join किया. So sorry for being late. It's all right, classic. So I was just trying to explain you the
concept of consequential seniority. Consequential seniority refers to promotion made purely on reservation basis, जो रिजर्वेशन के बेसिस पे प्रमोशन किया जाता है विदाउट कंसिडरिंग मेरिट, बिना मेरिट को कंसिडर किए. कैचअप रूल इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू इट. तो मैं आपको दोनों एक सिंगल एग्जांपल से समझाने वाला हूँ. I told you that let's take for an example two people who work in a public office. वो एक गवर्नमेंट जॉब में, एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं ऑन द सेम पोजीशन. ए is an assistant manager and he joined the job in 2017. Okay, he's a general category candidate. B is a reserved category candidate. B joined the job at the same position. B भी assistant manager ही है. Both are on the same position. But B joined in 2018. क्लियर यहाँ तक? अब क्या हुआ, क्योंकि देयर इज रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट एज वेल एज रिजर्वेशन इन प्रमोशन. जब प्रमोशन के लिए वैकेंसीज आई, सो सम सीट्स वर रिजर्व फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स. एंड दैट्स व्हाई हु इज सीनियर राइट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव द क्वेश्चन, हु इज सीनियर? ए और बी में से कौन सीनियर है? बोथ आर ऑन द सेम पोजीशन, बट ए ज्वाइंड इन 2017 एंड बी ज्वाइंड इन 2018. हु इज सीनियर? ट्राई टू आंसर. सो व्हाट इज कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी? मैं वही समझा रहा हूँ ट्रेसिक. इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ही समझा रहा हूँ. वेट फॉर अराउंड 10 minutes, you will get it that what is consequential seniority. Who is senior here? A is a general category candidate, B is a reserved category candidate. इन दोनों ने ही एक गवर्नमेंट ऑफिस में सेम पोजीशन पे जॉब ज्वाइन की. A ने ज्वाइन की 2017 में, B ने ज्वाइन की 2018 में. A became the assistant manager in 2017. B joined at the same position in 2018. Who is senior? A is senior. A is senior ना, because seniority is on the basis of time you have spent on a particular job. So A यहाँ पर senior है. A is 1 year senior to B. Okay. Now after assistant manager 2019 में कुछ वैकेंसीज आई फॉर द प्रमोशन एज मैनेजर, और उस वैकेंसीज में भी रिजर्वेशन था, एज इट इज अ फंडामेंटल राइट दैट देयर शैल बी रिजर्वेशन. ओके. नाउ ड्यू टू दिस रिजर्वेशन बी गेट्स प्रमोटेड अर्लियर बिफोर ए. ए से पहले बी प्रमोट हो गया. In 2019, B gets promoted to the post of manager. अब कौन सीनियर है? Who is senior now? Now B is senior because B is the manager, A is the assistant manager. तो अब B एक हायर पोजीशन पर है. बट फॉर इंस्टेंस टेक एन एग्जांपल, 2020 में A भी उसी पोजीशन पर आ गया. A also becomes the manager. In 2020, A also becomes the manager. Now who is senior? अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट्स हिट करेंगे. The two concepts that we are going to discuss today. Who is senior now? First of all, tell me. A और B ने सेम पोजीशन पे ज्वाइन किया एज असिस्टेंट मैनेजर. A ने 2017 में, B ने 2018 में. सो A यहाँ पर सीनियर है बिकॉज A ज्वाइंड बिफोर. ड्यू टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन, B वॉज अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट. B एक SC या ST कैंडिडेट था. B को पहले प्रमोशन मिल गया और B एक हायर पोजीशन पे पहुंच गया. नाउ वी कैन क्लियरली से दैट B इज सीनियर टू A बिकॉज B A से हायर पोजीशन पे है. बट लेटर ऑन, एक साल बाद, 2 साल बाद, A भी उस पोजीशन पर प्रमोट हो गया because general category candidate भी promote होगा ना, although he do not has reservation but he maybe will be promoted. Then who would be senior now? So Tracek, you are saying B would be senior. Why? Because B had spent more time on this position. यही reasoning है. अब B क्यों senior होगा? B and A equal हैं, equal position पे हैं, but इस वाली पोजीशन पे एज असिस्टेंट मैनेजर A spent more time, तो A senior था. At this position B spent more time. B पहले पहुंच गया, इसलिए B सीनियर है. That's the rule of consequential seniority. यही है consequential seniority का रूल, जो कहता है that once a reserved category candidate is promoted earlier than the general category candidate who was older on that position, then he would be senior. तो वही सीनियर होगा फिर. ओके. सो इट इज द रूल ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी. एक और कॉन्सेप्ट इस केस में डिस्कस हुआ था. आई होप द कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज opposed to consequential seniority is catch-up rule. Now what is catch-up rule? The catch-up rule is opposed to the rule of consequential seniority. बिल्कुल उसका ऑपोजिट है. एंड अकॉर्डिंग टू इट, अभी मैंने आपको A एंड B का एग्जाम्पल दिया. B, यहां पर आप B को A से रिप्लेस कर दीजिए.
because A was a general category candidate and B को A से. So A, who was a general category candidate, would regain his seniority over the reserved category candidate, that is B, when promoted. What does catch-up rule means? The name is itself suggesting कि catch-up rule ये कहता है कि इस कंडीशन में जब A भी उसी पोजीशन पर आ जाएगा, then according to catch-up rule, A will again catch up his seniority because उस ऑफिस को ज्वाइन पहले A ने ही किया था in 2017. एंड दैट डजंट मीन कि अगर मैनेजर की पोजीशन पे बी ज्यादा टाइम बी पहले रहा है तो बी सीनियर होगा बिकॉज ए हैज स्पेंट मोर टाइम इन सर्विस दैट्स व्हाई ए वुड बी senior now. It is the catch-up rule, which says that the general category candidate would catch up his seniority once he will come on the same position. Sorry, okay, contradictory to each other. Yes, Tasik. Are you clear first of all with consequential seniority and catch-up rule? A joined in 2017, B joined in 2018 on the same position. A is the senior because उसने पहले ज्वाइन किया. B SC कैंडिडेट है एंड A जनरल कैटेगरी है. ड्यू टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन B पहले प्रमोट हो गया. अब B सीनियर हो गया है क्योंकि A के पास प्रमोशन नहीं था, इसलिए A का प्रमोशन थोड़ा लेट हुआ और वो बाद में प्रमोट हुआ. जैसे ही वो बाद में प्रमोट हुआ, अकॉर्डिंग टू कैचअप रूल, A विल अगेन रीगेन हिज सीनियोरिटी. ही विल कैच अप. वो कैच अप कर लेगा अपनी सीनियोरिटी को. और यू विल से रीगेन, वो वापस से अपनी सीनियोरिटी को रीगेन कर लेगा. बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, अब कॉन्सिक्वेंटली बी सीनियर होगा और ए नहीं. आर यू क्लियर? आप प्रिंसिपल फैक्ट्स क्वेश्चन में अगर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी एंड कैचअप रूल के फैक्ट्स आते हैं तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. आई थिंक सो. ओके, इफ यू आर क्लियर टिल हियर देन लेट्स मूव फॉरवर्ड. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. आई विल गिव यू 10 seconds. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और कॉम्प्लेक्स चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर पढ़ना चाहिए. वी शुड लर्न टू कनेक्ट द डॉट्स. हाय साक्षी, गुड आफ्टरनून. You have 10 seconds. If you have any question, you can ask me. I do not think there is any doubt. I know consequential seniority and catch-up rule were complex, but मैंने इनको break down करके बहुत simply आपको समझाया है. Done? Then let's move forward. In this case, in the Bk Pavitra versus Union of India, validity of section 3 and 4 of Karnataka determination of seniority of the government servants promoted on the basis of reservation means this law was related to the determination of seniority. क्योंकि डेटर्मिनेशन ऑफ सीनियरिटी से दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड है और दोनों ही सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किए हैं. पहला कॉन्सेप्ट कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी और दूसरा कैचअप रूल. अब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका भी परेशान थी कि हम किस रूल को फॉलो करें. दोनों को एक साथ फॉलो करना नामुमकिन था. सीनियरिटी कैन बी डिटरमाइंड ईदर अकॉर्डिंग टू कैचअप रूल और सीनियरिटी कैन बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी. So they come up with a law in which they followed consequential seniority, not catch-up rule. Okay, what is saying, sir? But second point कैसे कहाँ जा सकता है? Because reservation is an exception of Article 14 and 16. Sir, मुझे समझ में नहीं आया ट्रेसे का what you are trying to say. Yes, reservation is an exception of Article 14 and 16. That's why reservation is legal. It is an affirmative action. So catch-up rule reservation को खत्म नहीं कर रहा है, वो seniority की बात कर रहा है सिर्फ. इफ यू आर सेइंग कि सर जो सेकंड पॉइंट है मींस कैचअप रूल है वो रिजर्वेशन के एंटी है, वो रिजर्वेशन के एंटी नहीं है. इट इज जस्ट रिलेटेड टू सीनियरिटी कि सीनियर कौन होगा. ओके, गॉट इट. सो द कर्नाटका डिटरमिनेशन ऑफ सीनियरिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2002 के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल हुआ on the basis that it was in violation of Article 14 and 16. Now, why was in violation of Article 14 and 16 that I am going to discuss now. Let's understand the case with the brief facts. And in case के brief facts को समझना है तो timeline के through समझते हैं. The whole thing started in 2002. The whole story starts in 2002. 2002 में the government of Karnataka enacted a legislation named Karnataka Determination of Seniority of the Government Servants promoted on the basis of Reservation Act 2002. Okay, इस law के section 3 में the government provided consequential seniority to the government servants promoted on the basis of reservation. Means जो reservation के basis पे promote हो गए उनको consequential seniority मिल जाएगी. You know the concept of consequential seniority. So आपको पता है. So यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने
सिविल सर्विसेज में की पोजीशंस में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को एक्सेप्ट किया, कैचअप रूल को नहीं. According to consequential seniority, the reserved category candidate, once promoted, will be senior from now onwards. And the general category candidate, when he would be promoted to the same post, he would not regain or catch up his seniority. Because seniority, catch up rule में from the date of joining होती है, and consequential seniority में from the date of promotion. You can also understand the difference like it. In catch up rule, seniority is determined from the date of joining. जब उन्होंने उस पर्टिकुलर ऑफिस को, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था. बट अकॉर्डिंग टू कॉन्सिक्वेंशियल रूल, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ प्रमोशन, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन. तो जो पहले प्रमोट हुआ है, जो पहले एक पोजीशन पे रहा है, वही उस पोजीशन का सीनियर होगा. असिस्टेंट मैनेजर पे जनरल कैटेगरी कैंडिडेट पहले था तो वो सीनियर हुआ. हायर पोस्ट पे, मैनेजर पे रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट पहले पहुंचा, अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल दैट आई गेव, तो अब वो सीनियर हो गया. तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने फॉलो किया. सेक्शन 4 ने उसी कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ एनफोर्स कर दिया फ्रॉम 27 अप्रैल 1978 ऑनवर्ड्स. व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मींस फ्रॉम पास्ट डेट. इंडिया में कोई भी लॉ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ एनफोर्स किया जा सकता है एक्सेप्ट द क्रिमिनल लॉ. Criminal law can never come up with retrospective effect. It is a fundamental right. Article 20 clause 1. Ex post facto law, which says that the criminal law in India cannot be enforced with retrospective effect. Apart from criminal law, any law in India can be enforced with retrospective effect. So इस consequential seniority को retrospective effect के साथ means past date के साथ enforce किया कर्नाटका गवर्नमेंट ने. What happened in 2011? इस लॉ के अगेंस्ट कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुए. ओके, एंड द टू सेक्शन, सेक्शन 3 that provided for consequential seniority and section 4 that enforced it with retrospective effect. These two were challenged in the High Court of Karnataka in 2011. High Court of Karnataka ने इसको upheld किया, and after that 2017 में appeal was filed in the Supreme Court against the High Court order. The two-judge bench of the Supreme Court comprising Justice A.K. Goyal and Justice U.U. Lalit. Justice U.U. Lalit is going to be the next CJI after N.V. Ramana. नेक्स्ट सीजीआई ये होने वाले हैं. इन्होंने हाई कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया. He reversed the decision of they reversed the decision of High Court. And the Karnataka government means Supreme Court ने कहा that the two sections were actually violative. वो violative थे of Article 14 and 16. Those two sections were struck down. कर्नाटका गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओबे करते हुए उस लॉ को खत्म किया और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो किया. अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन बीके पवित्रा एंड आल्सो in the constitutional bench case of M. Nagarajan versus Union of India, a very important case related to reservation. It constituted Ratna Prabha Committee. रत्ना प्रभा कमेटी बनाई गई जिसका काम था एससीज एसटीज एंड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स की सिचुएशन को समझना, दैट व्हाट इज देयर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट सर्विसेज. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी, द गवर्नमेंट बॉट अप अ न्यू लॉ. अब इस न्यू लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इस केस में चैलेंज हुई. सो अब आप क्लाइमैक्स पर आने वाले हैं, अब आप इस केस के क्लाइमैक्स पर आने वाले हैं. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द रत्ना प्रभा कमेटी, रत्ना प्रभा कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कर्नाटका डिटर्मिनेशन ऑफ सीनियरिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2018 एक न्यू लॉ आया और इस न्यू लॉ को चैलेंज किया गया बीके पवित्रा में. इट वाज चैलेंज्ड. व्हाई इट वाज चैलेंज्ड? बिकॉज द पिटिशनर्स, द बीके पवित्रा was contending, the lawyers of petitioners were contending कि ये कोई नया लॉ है ही नहीं, ये तो उसी पुराने लॉ को ये दोबारा से ले आए. वो 2002 वाला लॉ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2017 जजमेंट में स्ट्रक डाउन कर दिया था, उसी लॉ को एक नए रूप में लेकर आ गए 2018 में. इट वाज द कंटेंशन ऑफ
petitioners. Let's see what did the Supreme Court held in its 2019 judgment. BK Pavitra judgment came in 2019. सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 2018 एक्ट की चैलेंज की थी सुप्रीम कोर्ट में. was challenged in the Supreme Court on the ground that it was legislative overruling, which you may say overturned. अगर legislature किसी कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई करने की कोशिश करता है, then it is overturned. Okay, so legislative overruling of its 2017 judgment. Supreme Court ने 2017 judgment में कहा था that the 2002 Act was not valid. और उसी की legislative overruling है ये 2018 law. Okay, so that was a first contention of the petitioners that it was legislative overruling of its 2017 judgment in the matter, and the act was nothing more than an alternative to 2022 impugned act. 2022 act के जो 2002 वाला लॉ था उसी का ही अल्टरनेटिव है और कुछ नहीं. The two judge bench of the Supreme Court consisted of the next and the next CJI of India, yes, UU Lalit. After NV Ramana, next CJI ये होंगे. And he is the second in the list to be CJI. After UU Lalit, DY Chanchud is going to be the next CJI. Means second in the list to be. ये आप याद रखिएगा. एनवी रमना के बाद यूयू ललित चीफ जस्टिस बनेंगे और एनवी यूयू ललित के बाद डीवाई चंद्रचूड़. मीन्स ये सब बातें हमें पहले से ही कैसे पता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बनता है जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का. सीनियर मोस्ट, अगेन सुप्रीम कोर्ट में सीनियोरिटी कैसे डिटरमाइन होगी? हाउ विल द सीनियोरिटी इन सुप्रीम कोर्ट बी डिटरमाइंड? ऑन द बेसिस ऑफ एज? नो. Seniority is determined on the basis of time a particular judge had spent at the Supreme Court. Time spent at Supreme Court. जितने साल एक जज को सुप्रीम कोर्ट में सर्व करते हुए हो गए हैं वो उन सीनियोरिटी को डिटरमाइन करेगा. सो राइट नाउ सर, impugn means struck down. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई बनने के लिए सीनियोरिटी कैसे डिटरमाइन होती है. Now, what were the findings of the Supreme Court? If you want to know the findings of the Supreme Court in this case, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने दो सवाल थे. पहला कि क्या इस रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2018, जो 2018 में रिजर्वेशन एक्ट आया, जो कि रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन ही देता है, क्या वो लेजिस्लेटिव ओवर रूलिंग है 2017 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की? और क्या वो वही पुराना द ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, क्या वो वही 2002 एक्ट की कॉपी है? And second, whether the 2018 Act is in compliance with Nagraj judgment. Nagrajan judgment is very important. I'm going to tell you the name of two more judgments that you should study. Now, what was while adhering to the first question, Supreme Court held that 2018 Act is not just legislative overruling, but a corrective legislation. Supreme Court ने कहा कि ये legislative overruling नहीं है, corrective legislation है. 2002 में जो गलतियां की थी उसे इन्होंने सुधारा है. Karnataka government did committed some certain mistakes in 2002 and they rectified them. So it was a corrective legislation of 2002 Act. There were some mistakes, some problems in 2002 Act that were reconciled. Okay, that were rectified in compliance of the Supreme Court's parameters, which is evident from the fact. और ये किस चीज से एविडेंट है कि ये करेक्टिव लेजिस्लेशन था? बिकॉज दे फॉर्म्ड एन एक्सपर्ट कमेटी, रत्ना प्रभा कमेटी, इसने सारी एम्बिग्यूटीज को फाइंड आउट किया और फिर उन एम्बिग्यूटीज को फुलफिल ठीक किया. And coming to the second question, the bench held that the data submitted by the committee was found acceptable and not arbitrary to the Nagraj parameters. Nagraj Nagarajan versus Union of India का एक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था that certain data need to be collected before coming up with the reservation laws, कि उस पर्टिकुलर स्टेट में कितना रिप्रेजेंटेशन है रिजर्व कैटेगरीज का. One more important judgment that you need to remember: exclusion of creamy layer. First of all, what is exclusion of creamy layer? It came in the Jarnail Singh judgment in 2019. So while adhering to the contention of the petitioners that the Ratna Prabha committee in creating its report did not follow the exclusion of creamy layer principle. Exclusion of creamy layer says that एक particular category के भी जो creamy layers हैं उनको exclude कर दिया जाएगा from promotion.
Okay, that was coined by the Supreme Court in Janel Singh versus Lakshmi Narayan Gupta. The court held that जर्नैल सिंह का जजमेंट 2019 में आया, रत्ना प्रभा कमेटी 2018 में ही आ गई, तो उनको उस टाइम पर थोड़ी पता था कि एक एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर प्रिंसिपल आने वाला है. व्हेन द कमेटी मेड इट्स रिपोर्ट, उस टाइम पे कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं था. सो यस, very important question, it may come in your exam, that which case is related to the exclusion of creamy layer, in which case the exclusion of creamy layer principle was evolved. The right answer is Jarnail Singh judgment of 2019, exclusion of creamy layer, remember. And with the findings of the Supreme Court also pointed out its attention to a particular provision of the Indian Constitution, again important, Article 335. What does Article 335 says? The court also gave a reference to Article 335 of the Constitution, which states that the claims of SCs and STs can be taken into consideration, but without compromising efficiency of administration. एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी से बिना कॉम्प्रोमाइज करते हो एससीज एंड एसटीज के क्लेम्स को कंसिडर करना चाहिए, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. The court observed that the phrase efficiency of administration is nowhere defined in the constitution, and thus court defined it as equal representation. Efficiency of administration सिर्फ लिखा है लेकिन वो डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. Then according to the court, efficiency of administration means एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी का मतलब है इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए फ्रॉम ऑल द स्ट्रेटास ऑफ द सोसाइटी, इज इक्वल टू इक्वल रिप्रेजेंटेशन. एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट एंड रिजर्वेशन इन प्रमोशन दोनों ही जरूरी है. सर, तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंदिरा सोनी में नहीं आया था. इंदिरा सोनी जजमेंट में क्रीमी लेयर नहीं आया था. इंदिरा सोनी जजमेंट में 50% रिजर्वेशन कैप आया था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता. दैट केम इन इंदिरा सोनी. Okay, Indira Sawhney is also an important case. Okay, Tasik, Indira Sawhney judgment is also important. And while delivering the judgment, Supreme Court ने अमर्त्य सेन का नाम आप सभी ने सुना होगा. Okay, he is a Nobel Prize winner as well. In this context, Supreme Court quoted Amartya Sen, and who said this thing, that merit should be measured as an action that leads to societal good. और societal good तभी होगा जब affirmative action होगा. When there would be affirmative action, then there will be societal good. Supreme Court said this thing as well. So let's move to the first slide and let's see what all you have studied. चलिए आप मुझे बताइए कि आप क्या क्या आज की क्लास से जाने. कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है. कैचअप रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर है. आई होप सो. Yes, he is a great economist. Amartya Sen is a great economist. Basic. Apart from it, what did you learn? Article 335 क्या है आपको पता चला. आपको क्रीमी लेयर किस केस से आया ये पता चला. द एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट कहां से आया? जर्नेल से. आपको पता चला कि एम नागराजन जजमेंट which is very important, that is also related to reservation. You came to know about Indira Sawhney judgment. You came to know about the Karnataka Act of 2002 and 2018. You came to know about that what is a corrective legislation, what is legislative overruling, what is overturn and what is overruled. So yes, all these things we came to know, but the mammoth concepts that were focused today were catch-up rule and consequential seniority. I hope that are absolutely clear to you. If you have any doubt, you can ask me. Otherwise, let's end the short and sweet session. And before ending, I shall inform you. That India's largest scholarship test at 2 p.m. 2 बजे होने वाला है today, and it would be live on Unacademy app. Rank 1 will get 100% scholarship plus 30 minutes one-to-one session with our top educators. Rank 2 to 5 will get 50% scholarship on subscription, so do participate in it. You should also
know about the upcoming batches of an academy. On 19th of November, we are coming up with Evolve, a beginners batch for CLAT 2023. It's a bilingual program, 2 years course, and we will teach from the basic foundation. Also, the Score Booster 2022, 6 months comprehensive batch for NLU alumni for CLAT 2022, and it would be by NLU alumni. And why I said for NLU alumni, because the students of this batch are going to be NLU alumni in the future. 17th of November वी हैव स्टेटेड द टाइम एज वेल, क्योंकि समय कम है, तो इस बैच को तो स्पीड से चलाना है. जस्ट 6 मंथ्स बैच, अ बाइलिंगुअल कोर्स, 6 मंथ्स टू मिशन एनएलयू 2022. यस, जितना जरूरी प्लान प्रिपेयर करना है उतना ही जरूरी प्लान करना भी है. यू शुड हैव अ क्लियर कट स्ट्रेटेजी, एंड फॉर दैट पूजा अमन मैम, केशव मालपानी सर एंड कीर्ति भटनागर मैम आर कमिंग अप विद द wonderful sessions, the generic sessions. You can have a look over them. The timetable for last 6 months, 15th of November means कल ये होने वाला है. And Keshav Malpani sir will come up with resources for mission 2022, 17th November Wednesday, and on 19th November Friday, personal journey of becoming a rank holder. How Kirti Bhatnagar was a rank holder in CLAT and how you can be. She will be sharing her experiences and her deep insights. Students, the bugs bounty is on your screen. If you find any inappropriate content, you can report it by using the link. सर, तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी रूल ज्यादा फॉलो होता है. कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी एट प्रेजेंट फॉलो होता है इन इंडिया. ऐसे. थैंक यू. एंड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी इज इन आर्टिकल 16 एज वेल. यू विल फाइंड आउट. आप आर्टिकल 16 को पढ़िएगा, उसके सब क्लासेस को, यू विल फाइंड आउट कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी इज देयर, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली. थैंक यू स्टूडेंट्स. बाय बाय. Subscribe to the platform, hit the bell icon. Have a great day and have a great future ahead.